નમસ્કાર મિત્રો, હું છું રાજેશ ભટ્ટ, આપનો કાયદાકીય સલાહકાર, ભાવનગર, ગુજરાત. આજે કેસ વિશેની વાત કરું છું કે પોલીસ હંમેશા કોઈ ફરિયાદી લઈને જાય અથવા તો એ ફરિયાદના અનુસંધાનમાં આરોપીને પકડવાની મહેનત કરે. એ ટાઈમે પોતે પણ એટલું ક્રૂર વર્તન કરતા હોય છે, એટલી અમુક લુખાગીરી ઉપર ઉતરી જતા હોય છે કે જેના કારણે આખી કાયદાની સિસ્ટમ અને આપણને પ્રોટોકોલ બધા વિખાઈ જાય, એક ડરનો માહોલ ઊભો થઈ જાય. અને આ પોલીસની પોતાની તે અમાનવીયતાના કૃત્યો, ચોખ્ખા જ શબ્દ વાપરું છું, કે જેના કારણે આરોપી તો ઠીક પણ ફરિયાદી પોતે ક્યારેક ડરી જાય કે ફરિયાદ કરવી કે ન કરવી, આપણને કેટલું પૂછશે શું કરશે. આ એની અભદ્ર ભાષા, ક્રૂર વ્યવહાર એ ક્યારેક કોર્ટમાં પણ પોલીસ કરી બેસતી હોય છે. એનો તમને આજે દાખલોમાં વિડીયો આપું છું. એક પોલીસે કોર્ટ રૂમની અંદર અમારું પ્લીડ ચાલુ હતું, એવા સંજોગોની અંદર વકીલોની દલીલો ચાલુ છે અને એ કેસ બાબતમાં એ પોલીસને બોલાવવામાં આવી, જે તે કેસના તપાસ બાબતમાં. તો એ સમયે એણે જજ સાહેબે ખાલી એટલું પૂછ્યું કે ઠીક, વાય આર યુ લેટ, એટલે કે તમે મોડા કેમ છો. એના વિશે બહુ અત્યારે કેવો નથી, નામે નથી આપવું, તો વિડીયો જોઈ લેજો, હમણાં બતાવું છું. એટલે એણે એવો જે જવાબ આપ્યો, એના કારણે આખું કેસ કાયદાની ન્યાય પ્રણાલી અને પોલીસની વચ્ચેનો એક ગજગરાથી કેસ બની ગયો મોટો. અને જજ સાહેબે એ પોલીસને સીધો નોકરીમાંથી તો કાઢી નાખ્યો, પણ ત્યાંથી પાછો જેલ હવાલે કર્યો. એટલે પોલીસની કોઈ એવી સત્તા નથી હોતી કે કોઈ આરોપી, ફરિયાદી કે જજ કે વકીલ કે બીજા કોઈને ધમકાવી શકે કે પોતાની સત્તા નીચે કચડી શકે. શાંતિથી વિડીયો જોજો મિત્રો, અને આમાંથી શીખજો, સમજજો, અને ભવિષ્યમાં પનારા પડે તો કઈ રીતે પાડવા એ અત્યારથી થોડી ઘડ પાડજો જીવનમાં. જય હિન્દ મિત્રો. There was an officer, he misbehaved with the court, so contempt was drawn and it was referred to this court. Misbehaved? An officer is not expected to misbehave. It's a serious matter. It's a criminal contempt of court. This man go to jail also. This man may be removed from service also. Do you think he deserves to be in service? Look at the daredevilness. ये नेता भी हैं, पुलिस कर्मियों के नेता भी हैं. ये इन्होंने सबका ठेका ले रखा है कि आपने फलाने के खिलाफ आपने ऐसा किया, आप ऐसा किया. तो इनकी आंखों में भी शर्म नहीं है और ये महा बदतमीज किसी भी इंसान दिख रहे हैं, शक्ल से दिख रहे हैं. अब इनकी जगह कारागारी हो सकती है. ये जो रिप्लाई पेश किया है इन्होंने, ये अपने आप को न्यायपालिका से ऊपर समझ रहे हैं और न्यायाधीश के खिलाफ में अनर्गल आक्षेप लगा रहे हैं. कांस्टेबल लायक नहीं है. सब इंस्पेक्टर लेवल का आदमी एक डिस्ट्रिक्ट जज लेवल के आदमी, जज के ऊपर, जबकि कोर्ट की कार्रवाई चल रही है, उस पर अनर्गल स्टेटमेंट देता है. जब कोर्ट इनसे जवाब मांगती है तो बोलते हैं कि आपका ये व्यवहार तो और लोगों के साथ भी ऐसे ही रहा है और आपकी हम शिकायत करेंगे. इनकी आप ज़रा हिमाकत तो देखिए. इनको 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 कार्यपालिका में किसी भी पद पर रहने का कोई हक है? आप ये बताइए. जो सब इंस्पेक्टर लेवल का आदमी, जो सिर्फ इस बात के ऊपर से इतना ज़्यादा नाराज़ हो गया कि तुमने हमको ऐसे कैसे कह दिया कि तो हम लेट आए हैं. मतलब जज ये भी सवाल नहीं कर सकता कि आप इतना लेट क्यों आए, और फिर उसको धमकी दे रहे हैं जज को आप कि तुम्हारी शिकायत मैं डीजी पुलिस से करूंगा और हाईकोर्ट जज से करूंगा. मैं नाम. इस आदमी के अंदर इस प्रकार की बदतमीजी कूट के भरी हो, उस आदमी को आप क्या समझते हैं? हम लोग को छोड़ देना चाहिए. और इसका इफेक्ट क्या होगा लोअर जुडिशरी में? आज सीनियर जज को आप इस प्रकार से आप बात करते हो, ये आपका डेमेनर है, ये कंडक्ट है.
तो हाई कोर्ट से क्या उम्मीद करते हो कि हम अपने जज को इग्नोर करके जो उसके साथ में कोर्ट कार्रवाई के वक्त हुआ, इट्स अ केस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, इट्स अ क्लियर केस ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. You prepare yourself and argue finally. It is difficult for us to accept your apology. Looking to the proceedings initiated by the judge, followed by statements of persons who were present in the court and who have consistently stated about his conduct in the court. And this is further aggravated with the kind of reply he has given in the court on 9-1, on 11-1, para 5. And on the top of it, his demeanor before the High Court on the last date of hearing before the bench headed by the Honorable Chief Justice. Have you seen that? After going through this reply, हाँ. that situation Situation? much corrupting after going through this reply. Obviously, that is why it is written here. This is a reflection of his conduct. On 9-1, first he tenders apology. And on 11-1, he is making allegation against the judge. In respect of some other incident, he is naming the persons in that para 5. आपने इनके साथ में ऐसा बिहेव किया, ऐसा बिहेव किया. Look at him. यानी अपने कंडक्ट को अपॉलॉजी मांगने के बजाय आप उसके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हो जज के ऊपर कि आपने फलाने पुलिस वाले के साथ भी ऐसे बिहेव किया था. और आप उम्मीद करते हो कि हाई कोर्ट में हम आपकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट कर लें. तो क्या हम अपनी जुडिशरी को, सबऑर्डिनेट जुडिशरी को डिमोरलाइज करेंगे क्या, ताकि आप वहाँ जाके बोलें देखा मैंने हाई कोर्ट से ऑर्डर लेके चला आया हूँ, अब बोलो क्या बोलते हो. ऐसा करना चाहते हैं क्या आप? दुधावत साहब सीनियर एडवोकेट है भाई, इनके कहने से हम मान भी जाए, शरीफ आदमी है ये भाई, इनका क्लाइंट भी शरीफ होगा, ये मानना तो मुश्किल है. आपकी शराफत इतनी हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं कि आप वो सुन सकते हैं पूरी तरीके से. आप हमें दलील दीजिए. मोदी साहब खड़े हैं सामने, इनसे पूछेंगे हम इनका क्या कहना है. आफ्टर इट्स अ मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. और लर्नेड जज ने ऐसे ही नहीं भेज दिया कागज. आफ्टर ड्यू इंक्वायरी, after recording of statements of witnesses, the reference has been made. Complete record is with us. And on the top of it, this person had the audacity to even speak to the press. The press man, Saharia, who is that? Rajoria. His statement is recorded. Who is that press fellow? Sahara. Salil Srivastava, news reporter, he says that yes, he has said such things outside in the court premises, outside the courtroom, and 2 CDs have been annexed. What else is required? You please tell us what is required. How can we say that judge was wrong? Or nothing of the kind happened in the courtroom before the lower court. You prepare yourself and let him be ready to go to jail. Prima facie. After seeing these CDs, we will ensure that these CDs played in the courtroom. And you hear what you have said. Your client has said. And then let us know what we should do.
Can we play this CD here? How do we have a system here It should have a side slot in the screen. should in have- the screen? Yes, it should have a side slot where it will. The big CD is there. Had it been a pen drive, probably it would have been possible. Side में CVT is Huh? Can it be converted into pen drive? Yes. This we can do it in the courtroom itself. So what do you want? You want to argue today? Huh? All right, you argue. We will play the CD here also. सिटी में भी सब यही होगा. नहीं यही होगा क्या? पब्लिक को पता होना चाहिए कि एक पुलिस का आदमी कोर्ट में कैसे बिहेव किया और क्या स्टेटमेंट प्रेस को दिया. इससे बड़ा एग्रीवेशन और क्या हो सकता है? ना कि आपने सिर्फ कोर्ट में मिसबिहेव किया, आपने उस बात को पब्लिक में प्रेस के माध्यम से बताई. तो इस प्रकार की तो आपका स्वभाव है, इस प्रकार का तो आपकी करतूतें हैं. अभी भी आंखों में शर्म नहीं है. अभी भी वो ऐसे घूर रहे हैं हम लोगों को कि ठीक है जज साहब आप भी बोलो, आपके खिलाफ भी कुछ बोलता ही होगा. अब तुम्हें शर्म हो या ना हो, तुम्हारी अपनी जिंदगी है, लेकिन तुमने जो कर्म किए हैं नीचे, उसका फल तो भुगतना पड़ेगा तुमको. क्योंकि हम जज को तो इग्नोर नहीं कर सकते, जिसने राइटिंग में सब कुछ भेजा हुआ है कोर्ट को. आप पढ़ के आइए, जो करना है करिए, और नेक्स्ट पेशी में इसकी जो CD को कोर्ट में इसको पेन ड्राइव में कन्वर्ट करो, है, और उसको हम लोग प्ले करेंगे कोर्ट में.